Good morning, class 8th. Yesterday we have finished up till here. We use the modals may, might, could when we are not sure about the future. So I might read a lot of novels this vacation, or I might attend the animation club. Means he is not very sure that whether he will read a lot of novels this vacation or he may attend the animation club. So when you are not sure about anything, you use might. We could get some evidence from this pen drive. He normally saves everything in this. We could get means could. मिल सकता है. You can get some evidence, but normally saves everything, but you're not sure about it. I may visit the doctor tomorrow means you can visit or cannot visit. Both things can happen, not sure. So we can use should if we think something is expected to happen sometime in the future. We use should जब हमें लग रहा है कि कोई एक्शन फ्यूचर में होने वाला, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम उसको. We should be done with this project by tomorrow means by tomorrow we should finish this project. So here we will use should be. The program should be over by 1 o'clock means the program is expected to over. So should, we will use should when it is expected. उम्मीद है आपको. Clauses opening with time periods. Now the clauses with the time words like when, after, until, we often use a present tense form of talk about the future. So in clauses with time words like when, after, until, we often use a present tense form to talk about the future. जब हम ये clauses use करते हैं time words के जैसे when, after, until, we often use present tense form to talk about the future. हम प्रेजेंट टेंस फॉर्म यूज करते हैं बट हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. I'll come home when I finish work means I'll come home. ये तो फ्यूचर टेंस हो गई. When I finish work means प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि जब मैं काम खत्म करूंगा I'll come home. You must wait here until your father comes. Until your father comes. Here we are using this time word until, so we are talking about the present tense. But है ये फ्यूचर की बात. You must wait here. आपको वेट करनी पड़ेगी जब तक कि आपके फादर यहाँ नहीं आ जाते. They are coming after they have had dinner. तो वो यहाँ आ रहे हैं but they'll come after they have had dinner. Means they will come. It's going to happen in the future. But we will use the present tense only. Clauses with if expressing conditions for the future actions. In clauses with if, we often use a present tense form to talk about future. अगर बच्चे if लगता है ऐसा clause है वहाँ पे तो we use present tense form future के बारे में बात करने के लिए. हम वहाँ पे भी present tense form का use करते हैं. Like Charles won't be able to join us if his parents arrive. चार्ल्स हमें ज्वाइन नहीं कर पाएगा. क्लॉज क्या आ गया? इफ हिज पेरेंट्स अराइव, अगर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं. तो अगर इफ का क्लॉज है तब भी हम प्रेजेंट टेंस वाली फॉर्म यूज करते हैं. अराइव, वी विल नॉट से अराइव्ड, वी विल नॉट से अराइविंग. सिंपल प्रेजेंट टेंस. इफ इंडिया विन्स, अगेन इफ क्लॉज इज देयर. अगर इंडिया जीतता है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस लगेगा. फॉर्म हमारी वर्ब की वही लगेगी. दे विल बी द चैंपियंस. इफ इंडिया विन्स मीन्स इफ क्लॉज आ गया ना. वी डू नॉट नॉर्मली यूज विल इन क्लॉजेज विद इफ और विद टाइम वर्ड्स. नॉर्मली क्या होता है, इफ के साथ हम विल नहीं यूज करते हैं या फिर हम टाइम वर्ड्स के साथ भी विल नहीं यूज करते हैं. लेट्स सी. I'll come home when I finish work, not when I will finish work. Okay? I'll come home. हमने यहाँ पे will use किया है, यहाँ पे नहीं किया. ठीक है? With if, हम if नहीं, if के साथ नहीं हम will use करते. We normally do not use will in the clauses with if. और अगर time word हो तो भी हम वहाँ पे will नहीं use करते. हम ये नहीं कहते when I will finish work. No. Not when I finish work. No. I'll come home when I finish work. But we can use will if it means a promise or an offer. अगर कोई promise या offer की बात हो रही है तो हम वहाँ पे will use कर सकते हैं. I will be very happy if you will win the match. तो यहाँ पे हमारी ऑफर आ गई या प्रॉमिस आ गई. उन्होंने आपसे प्रॉमिस मांगा है कि अगर आप
मैच विन करते हैं, देन आई विल बी वेरी हैप्पी. हियर वी विल यूज विल. वी शुड फिनिश द जॉब अर्ली इफ टिया विल हेल्प अस. अगर टिया हेल्प करती है हमारी तो वी शुड फिनिश द जॉब अर्ली. तो हियर अगेन it's a offer and here it is a promise. We can use the future continuous instead of present continuous or going to for the emphasis when we are talking about plans, arrangements and intentions. So here it is saying that we can use future continuous. हम future continuous कहाँ use कर सकते हैं? Instead of present continuous or going to for emphasis. अगर हम कहीं पे किसी चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लान्स, अरेंजमेंट्स और इंटेंशंस. ठीक है. नाउ कम टू द एग्जांपल्स. दे विल बी कमिंग टू इंस्पेक्ट आवर स्कूल नेक्स्ट वीक. नाउ हियर यू कैन सी दैट देर इज सम प्लानिंग और देर इज सम इंटेंशन ऑफ कमिंग फॉर द इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन की प्लान हो रही है तो वहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं. दे विल बी कमिंग. वो हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन करने नेक्स्ट वीक आ सकते हैं. तो यहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूस यूज करेंगे. द प्राइम मिनिस्टर विल बी विजिटिंग द फ्लड विक्टिम्स टुमारो. विल बी विजिटिंग, इट्स ऑलरेडी बीन प्लान्ड. सो हियर वी विल यूज फ्यूचर कंटिन्यूस. जहाँ पे प्लान हो, कोई अरेंजमेंट हो, कोई इंटेंशंस हो आने का या एक्शन के होने का, वहाँ पे भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं. नाउ कम टू पेज नंबर 46. Match the sentences talking about the future in column A with the senses expressed by them given in the column B. Here the senses have been given and we have to match the column A with the column B. Now, the flight takes off at 8:30 a.m. Now here what is it? क्या आपको लग रहा है इसमें? इसमें क्या लग रहा है आपको? द फ्लाइट टेक्स ऑफ एट 8:30. इसमें आपको एक शेड्यूल्ड टाइम है, एक्शन अरेंज किया हुआ है, तो ये आपका शेड्यूल्ड अरेंज एक्शन है. ये सेंस दिखा रहा है कि यहाँ पे आपकी ट्रेन है या फ्लाइट जो है शेड्यूल्ड है. माई फादर माइट गेट मी अ लैपटॉप. माइट गेट, तो ये फ्यूचर एक्शन है. विच वन इज नॉट वेरी श्योर. My father might get me a laptop. Might get me a laptop. It's a future action about which one is not very sure. You are not very sure whether your father will get you a laptop. So then you use might. बताया था ना मैंने आपको. I'll be paying the fees tomorrow. You will be paying the fees tomorrow. You are making a prediction about the future. आप कल की बात कर रहे हैं ना. I'll be paying. ठीक है. So it's a prediction. Now I will show you how to do it. You will show, huh? So here what you are doing? You are I will show how you do it. Now number 4 I have not written. This is emphasizing plan for a future action. I will show how to do it. Now will show, हम जब predictions करते हैं, it's written here ना, will. We use will to talk about the future to make predictions. So here it is number 4. Here. You are emphasizing about a plan for the future action. My friend is going to meet me at the station. Now it's expressing a plan or an intention. आपका फ्रेंड आपको स्टेशन पे मिलने वाला है, तो ये एक प्लान भी हो सकता है और इंटेंशन भी हो सकती है. Your friend is intending you to meet at the station. So she wants to go to the US. Now what is it? It's a future plan that is most likely to happen. It is a future plan that is most likely to happen. वो जाना चाह रहे हैं ना, so it's a plan. If my driver takes leave, I'll drive. If my driver, clause आ गया if का, expressing condition for the future action.
ठीक है, इफ का क्लॉज आ गया, अगर मेरा ड्राइवर लीव करता है देन आई विल ड्राइव। तो ये एक कंडीशन है फॉर द फ्यूचर एक्शन। यू शुड बी एबल टू कंप्लीट इट इन 2 minutes. You should be able to. Now here it's an action expected to be completed by someone sometime in the future. You should be able to complete it. आप एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं किसी से कि ये आपका काम 2 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। I'll watch TV after I complete the homework. So here I'll watch TV after. Like it is a fixing time for the future action using the time words. Fix कर दिया ना आपने, I'll watch TV after I complete the homework. So you fixed the time. Fixing time for the future action using the time word. Now 10 we come. Let's rush home, it's going to rain. Let's rush home, it's going to rain. It's a action which is most likely to happen. आपको लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो let's rush home. It's a prediction. ठीक है, इट्स मोस्ट लाइकली टू हैपन। जब कोई चीज होने वाली होती है तब हम ये यूज करते हैं। आई थिंक द वेजिटेबल प्राइसेस विल फॉल नेक्स्ट वीक। अगेन इट इज अ प्रेडिक्शन। यू आर एक्सप्रेसिंग एन ऑफर। आप एक्सप्रेस कर रहे हैं एक ऑफर की मुझे लगता है कि जो वेजिटेबल के प्राइसेस हैं वो नेक्स्ट वीक तक नीचे आ जाएंगे। सो इट्स एन एक्सप्रेसिंग एन ऑफर. So you have to memorize all these things, that when to use these, when there is an expressing an offer or you are emphasizing a plan for future action, means you have to keep all these points in mind. You have to memorize all these while you are solving the exercise of the tenses. Fill in the blanks with will, shall plus verb first form or going to be first form. The child has grown very naughty. The school authorities dash to his parents are going to write. Okay, because he is growing very naughty, so here we'll use are going to write. When the war begins, the prices will shoot up. Here again you are showing a prediction. ठीक है ना, it is most likely to happen. So when the war begins, the prices will shoot up. I am going to consult a doctor tomorrow. I am going to consult a doctor tomorrow. The market might be closed on Sunday. So the market will be closed. Here will be आएगा, not might. Market will be, be तो लगा हुआ है. The market will be closed on Sunday means again it's expected to happen. Look at the rush of the passengers on the platform. They will not get seat in the train. So there's a lot of rush on the platform, so they will not get the seat in the train. If you walk in this heat, you will fall ill. You will fall ill. So here the condition is there, clause is there. In a few years' time, life in Kathmandu is going to be very difficult. So here some action is going to happen in the future, near future. Okay. So in the first one, the child has grown very naughty. The school authorities will write, या going to write, both can come. Child has grown very naughty. The school authorities are going to write to his parents. So this is also ठीक. This is also correct. Are going to write. Will shoot up. Yes. I will be, not am. Correctified. I will be. I will be going to consult a doctor tomorrow. The market will be closed on Sunday.
Look at the rush of passengers. They will not get the seat in the train. If you walk in this heat, you will fall ill. And in few years' time, life in Kathmandu is going to be very difficult.